Yes, everyone, we will join. We will start in 2 minutes. Let everyone join by then. Many of them are yet to join. So maximum of the students have not joined. Were you all aware of the physics class now? Yes, sir. सभी को पता था अभी फिजिक्स क्लास है? Yes, sir. Many of you have not joined. I'll just inform them. तो इससे पहले हम स्टार्ट करें, before that everyone joins. Can anyone recapitulate what we did in the last class shortly? We were talking about forces, right? We started with new unit, forces and laws of motion. Remember everyone? Yes or no? Yes, sir. Yes. Yes, Good, sir. good, good. तो इससे पहले सब ज्वाइन करें. Let us revise till then. How do we define force? Who will define? Raise hand. What is force?
Chalo, Shivansh will tell us what is force. So a force is a push or a pull or a hit applied to an object. To an object, right? And whenever force is applied, we were already aware of what effects it can produce. So there are various effects, and mainly we need to explore those effects which cause the change in state. So basically related with motion. So change in state, we can say, of course, change in state is categorized by the change in velocity we have already seen in the last class, and also the change in direction. So talking about the forces, we learnt about two types of force: balanced and unbalanced force. So who will describe me what is balanced force? Balanced force क्या है? चलो, Rohan will tell us what is balanced force. Sir, balanced force is a situation where when two forces applied and the net force is zero. And the net force is zero, right? So two or more forces also. ऐसा नहीं दो ही force हो, 8-10 force हो जाए, but basic effect क्या होना चाहिए? Total force on the right hand side must be equal to total force on the left hand side. तो यहाँ पर भी ये जो forces हैं, 4 forces हैं, they are all balanced, right? Because इधर लेफ्ट में भी 10 न्यूटन है, राइट में भी 10 न्यूटन है. नाउ इट्स नॉट ओनली नेसेसरी कि लेफ्ट और राइट में हो, ऐसे भी हो सकते हैं फोर्स. तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स होना चाहिए. जैसे इधर हो गया 5 न्यूटन, इधर मैंने 12 न्यूटन कर दिया, तो क्या ये बैलेंस्ड फोर्सेस हैं? आंसर इज नो, बिकॉज यू कैन सी ये तो 10 न्यूटन ही हो रहे हैं टोटल, and this is 12 Newton. It is greater than 10 Newton. So our definition of the balanced force is not being met here, right? So these three forces, we will say they are unbalanced. Chalo, let us describe in detail the types of forces. So एक तो हमने describe किया balanced force और दूसरा unbalanced force. ये last classes में हमने डिस्कस कर लिया था. बैलेंस्ड फोर्स वो होता है जहां पर कि नेट फोर्स क्या हो जाए? जीरो हो जाए. अनबैलेंस्ड में नेट फोर्स, नेट मीन्स द टोटल फोर्स, जीरो ना हो, देन इट इज unbalanced. So we also have other types of forces depending on the contact between the surface. तो पहले मैं लिख देता हूं, then it will be more sensible to talk about the types of forces. तो एक तो हुए contact force and दूसरा हुआ non contact force. तो पहले एग्जांपल देता हूं, then you all will be sure what this contact and non contact force is. कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल हो गए फ्रिक्शन, नॉन कांटेक्ट के एग्जांपल हो गए वेट. नॉर्मल फोर्स और रिएक्शन फोर्स, दैट इज आल्सो कांटेक्ट फोर्स. नॉन कांटेक्ट फोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर मैग्नेटिक फोर्स, ये सारे नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गए. सो लेट अस फर्स्ट सी what is this contact force and non contact force. So anyone will try to define what is contact force. Weight is due to gravitational force. So either you say gravitational force या weight भी चलेगा as non contact force, है ना? Yes, forces where contact is required for it to act. Where contact is required का मतलब क्या है? We are only talking about the contact between the surfaces. किस contact की बात कर रहे हैं? Surfaces. So contact force, we will say that force, or you can say the forces acting when there is contact between surfaces. When there is
कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेसेस। वही फोर्स होंगे जो कि तभी एक्ट करेगा जबकि कॉन्टैक्ट होगा, जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन इज प्रोवाइडेड बाय द सरफेस। तो जब ऑब्जेक्ट सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा तभी वो फोर्स कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा। बट ऑन द अदर हैंड यू कैन सी वेट। जैसे मैं वेट का एग्जांपल ले लिया, so weight is the force acting on the object at any place. Even when there is no contact between surface, weight is acting. So here, for these forces to act, there is no necessary that the contact between surfaces should be there. So how can we define non-contact force? As the forces acting, or you can say emerging, when contact between the surfaces is not required or present. क्लियर है सभी को कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? Right, so you should remember the 4 types of forces depending on whether it is balanced or not, whether it is in contact between the two surfaces or whether the two surfaces are not in contact. Okay, for example, if you also take जैसे magnetic force, electrostatic force you will read in higher classes. But what is electrostatic force? Force acting between the two charges. अब दो चार्जेस में जरूरी नहीं है कि दोनों चार्ज टच कर रहे हो तभी वो फोर्स एक्ट करेगा। इफ द टू चार्जेस आर इवन सेपरेटेड, द फोर्स इज स्टिल देयर। जैसे चार्जेस सेम है तो क्या फोर्स होगा? रिपल्सिव फोर्स। तो यहाँ पे कांटेक्ट नहीं है ना, सो दिस इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। दो मैग्नेट को हमने थोड़े दूर पे रखा, लेट अस से नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल इज नियर टू इट, सो देयर विल बी रिपल्शन इन दिस केस। और ये भी कैसे हो रहा है? विदाउट एनी रिक्वायर्ड कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू मटेरियल्स। ये जो सरफेस हैं दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, राइट? So everyone should write this down, the different types of forces. Then we will see the important forces. We will see in detail friction, normal or reaction force, and weight. Quickly write them down. जिनका हो गया है दे विल लेट मी नो। तो जो नोट करना है उसको फिर से समझ के नोट करना है ना? नो ऑप्शन नहीं करना है। जिनका होते जाएगा वो यस करते जाएंगे, जैसे 100% होगा वी विल मूव अहेड। चलो हो गया। So let us see these forces in detail, the important forces. तो अभी ध्यान से पहले समझेंगे, फिर नोट डाउन करने का टाइम मिलेगा।
So we'll be talking about in detail what is weight. तो हम फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी गाइस, है ना. फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट हैज डायरेक्शन. तो हम किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है फोर्स वो भी देखेंगे यहाँ पर, और उसका क्या मैग्नीट्यूड होता है, मीन्स क्या फॉर्मूला होते हैं वो भी देखेंगे. सो फर्स्ट वी हैव वेट, देन वी विल टॉक अबाउट नॉर्मल फोर्स, जिसको कि हम रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं, एंड देन वी विल टॉक अबाउट friction force, and finally we will talk about a little bit about the tension. So weight, every object has weight, right? There is a difference between weight and mass. Weight is a force and mass is the amount of substance contained. So let us suppose this is the surface of earth. Let us suppose मैंने कोई किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका. So after some time what will happen? This object will return back to the surface. So why this object will return? Because at every point there is force acting on the object. And what is that force? That force is called as weight. So weight acts at all points, at all places. And this weight is due to gravitational force. हम next unit में in detail we will see what is gravitational force. But as of now you all would be sure कि object पे अर्थ के वजह से gravitational force लगता है, and that results in the weight of an object. अब weight का एक्सप्रेशन क्या होता है ये देखो. डायरेक्शन, जैसे मैं पूछा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो वेट का क्या डायरेक्शन होगा? डाउनवर्ड्स. एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ वेट विल बी डाउनवर्ड्स एंड इट इज गिवन बाय mg. तो वेट का एक्सप्रेशन क्या मिला? m into g. What is g? G is acceleration due to gravity. अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के वजह से वॉट एवर एक्सीलरेशन इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट वी कॉल दैट एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और g का वैल्यू क्या हो गया? यू कैन टेक इट एज 9.8 और अप्रोक्सीमेटली 10 ऑल्सो. वॉट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस वेट? डायरेक्शन इज vertically downwards. So one force we have completed. So before we move to the normal, everyone is required to write down this weight. m is the mass. m क्या है? मास है ऑब्जेक्ट का. So mass into acceleration due to gravity क्या होता है? Weight. And in what direction weight acts? Vertically downwards. चलो जल्दी से नोट डाउन करो. Just in a minute. नोट डाउन करने का मतलब है once more you have to go through it and then उसको उतारो.
अच्छा, इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करना है. When did you join the class, श्रेया? ये वेट फिर से एक्सप्लेन करना है. ठीक है, कर लेंगे, बट लेट मी नो व्हेन डिड यू ज्वाइन द क्लास. ओके, तो क्या डाउट है वेट में, पूरे को एक बार फिर से समझाना है. द कंप्लीट थिंग अबाउट वेट. अच्छा, वेट से ही ना, मत मुझे लगा राइट फ्रॉम द फर्स्ट. ठीक है, बाकी को समझ में आ गया. सो लेट अस सी द वेट क्या है. वेट इज अ फोर्स विच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना. क्यों डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा. तो हम क्या देख रहे हैं, whenever we are throwing the object up, the object is coming down. So if the object comes down, that means the force is also acting in the downward direction, and that's why we take this direction of weight as vertically downward direction, right? I have mentioned here vertically downward direction. And yes, we have the expression to compute this weight as well, that is m times g. Apart from this, what other doubt you have? See, weight is due to the gravitational pull of Earth, right? Weight is due to the gravitational pull of Earth. And the gravitational pull is always in the downward direction. You can say towards the surface, which is vertically downwards. At no point you will find that the direction of weight is any other direction other than what I have mentioned here, vertically downwards. कहीं भी ऑब्जेक्ट को हमने फेंका तो नीचे ही फोर्स लगा ना. Okay, you all must have written this. What is W is equal to mg? This is a formula to find out the weight. So for example, you can write this example as well. जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, let us say it is 10 kg ऑब्जेक्ट. इस पे कितना वेट लगेगा? How will we find that? Using this expression m into g. m कितना है? 10 kg है. g कितना है? 9.8 एग्जैक्ट है ना. ये 10 अप्रोक्सीमेट है, ये एग्जैक्ट है. तो आंसर क्या हो जाएगा? 98. यूनिट क्या हो जाएगा? वेट फोर्स है तो यूनिट न्यूटन हो जाएगा. सो दैट मीन्स हाउ मच वेट इज एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट? 98 न्यूटन. इन व्हाट डायरेक्शन वेट इज एक्टिंग? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो वैसे ही एक और, चलो टेल मी द वेट एक्टिंग ऑन 5 kg object at number 1 the surface of Earth, and number 2 at a height of 10 meters. दोनों पॉइंट पे वेट निकालना है. बताओ कितना होगा? Weight will be same, that's right. No, weight will be same, that is right. And that will be 49 newtons, because weight formula देखो, weight का formula क्या है? W is equal to m into g.
तो ये मास और जी जो है दैट इज कांस्टेंट है ना, मास एंड जी इज कांस्टेंट। एक ही फॉर्मूला है हमें वेट निकालने का, तो कहीं पर भी मैं पूछूं तो वेट विल बी सेम, दैट इज 5 into 9.8, दैट इज 49 न्यूटन्स। Okay, let us talk about the next force, that is reaction force. So let us suppose I keep any object on the surface of, let us say table. ये एक टेबल है और टेबल पे मैंने इस 10 kg ब्लॉक को रखा है, right? Understand the scenario. I have kept an object on the surface of table. This is the surface of table. Now, before going into this, tell me all guys, ये अगर ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने राइट के तरफ फोर्स अगर लगाया, अगर कोई फोर्स राइट के तरफ एक्ट कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा, राइट में या लेफ्ट में या अप में या डाउन में? राइट है ना, वेरी सिंपल, राइट डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा। लेट अस से ऑन द सेम ऑब्जेक्ट दैट आई हैव ड्रॉन, अ फोर्स इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो वी कैन कंक्लूड ऑब्जेक्ट moves in the direction of the force applied, है ना, जिधर फोर्स रहेगा उधर मूव कर रहा है। सो लेट अस यूज दिस सेम डेफिनेशन हियर। ऑब्जेक्ट पे हमने क्या देखा, हर पॉइंट पे वेट एक्ट कर रहा है, राइट? वेट एक्ट करेगा नीचे, बट व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, इट इज एट केप्ट ऑन द सरफेस ओनली। सो इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस व्हाट वी कैन से कि कोई एक अपोजिट फोर्स होगा which is balancing the weight, है ना। इस केस में ऑब्जेक्ट वाज मूविंग टू द राइट, अगर मैं इसको राइट से भी उतना ही फोर्स लगा दूं तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नो। सो हियर इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, दैट मीन्स देयर इज सम equal and opposite force, equal and opposite force, and this force only we call it as normal force or reaction force, right? So numerically this normal or reaction force would be equal to the weight. And what is the direction of this reaction force? Perpendicular to surface and away from the surface. This is the surface, it is acting perpendicular and away from the surface, or you can say opposite to the weight. So now you all will tell me, let us suppose ये एक inclined plane है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा, so you have to tell me ए और बी में सेलेक्ट करना है कि इस ऑब्जेक्ट पे वेट किधर एक्ट करेगा। सो वेट, क्या ये ए के डायरेक्शन में एक्ट करेगा या फिर बी के डायरेक्शन में एक्ट करेगा? दिस इज केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सभी कोई आंसर देंगे? चलो, मोस्ट ऑफ यू से ए, एंड ए इज द राइट वन। वेट, वेट हमेशा किधर एक्ट करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकल, ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, एंड
जो बी दिए हैं दैट आई कैन अंडरस्टैंड, बट ये सी क्यों मार्क किए हो? सी तो ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ पर ए और बी में ही चूज करना था। ओके, नाउ अगेन यू विल सेलेक्ट फ्रॉम ए एंड बी फॉर डिफरेंट क्वेश्चन। अब इसी ऑब्जेक्ट पे टेल मी व्हाट विल बी, भाई अभी ये क्वेश्चन के बाद ये सेलेक्ट करना था। नॉर्मल और रिएक्शन फोर्स बोथ आर सेम, किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ए या बी? ये ए और बी अब नहीं रहा, किधर एक्ट करेगा नॉर्मल फोर्स? ध्यान रहे नॉर्मल फोर्स का मैं यहां लिख दिया हूं। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इन दोनों फोर्स में परपेंडिकुलर क्या है? ये है ना परपेंडिकुलर, सो ए विल बी राइट। नॉर्मल फोर्स ए और वेट भी ए, right? Maximum of you have selected B, so I can understand why you have selected B. ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन नहीं कहा हमने, क्या डायरेक्शन इसका फिक्स किया? वी विल लुक एट द सरफेस एंड वी विल फाइंड द परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और जो परपेंडिकुलर होगा क्लियरली यू कैन सी दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, so A will be the direction of normal force and this A will be the direction of weight. Okay, then you all will again tell me, can I say in this case that weight is equal to normal force or reaction force? We cannot say, that's right, this is not equal, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट पे ये मैं डिलीट कर दे रहा हूँ ये सारी चीजें जिधर फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो वेट किधर एक्ट कर रहा है? नीचे। नॉर्मल फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, तो क्या ये इक्वल है? वी आर नॉट श्योर, है ना, क्योंकि अगर ये वेट इधर एक्ट कर रहा होता देन वी वुड हैव सेड दिस इज इक्वल टू दिस, राइट? सो इन वेक्टर्स यू मस्ट हैव सीन कंपोनेंट्स, तो वेट का कोई कंपोनेंट है विच इज बैलेंसिंग दिस नॉर्मल फोर्स, right? So it is not equal definitely because this is not the direction of the weight. Okay, so you all are required to write down the stuffs related to the normal force एक बार फिर से समझ के, and then ask me the doubts for this, else we'll move to the this friction force. Any doubts you can ask me?
weight mass cannot be in grams. You have to take everything in SI unit. Mass should be in kg and g should be in meter per second square, because g is acceleration due to gravity. Normal force will always be perpendicular to the surface. Sir, Yes, what is R? R is the reaction force. Either you call normal force or these reaction force, all are same. Okay, sir. Yes, and in this inclined plane you can see object is moving, right? यहाँ पे छोड़ेंगे ऑब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट स्लाइड कर जाएगा. ये क्यों स्लाइड करेगा? बिकॉज ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स. ऑब्जेक्ट तभी मूव करेगा जब फोर्सेस अनबैलेंस्ड हो. अगर ये डायरेक्ट इधर रहता वेट और ये रिएक्शन, तो ऑब्जेक्ट क्या होता? इट वुड हैव बीन रिमेन स्टेशनरी फॉरएवर, है ना, which is not the case. In some cases objects also slide down. Done, sir. Yes, everyone should do. And then we will talk about the friction force. Done, sir. Done. So let us see friction force now. You would have definitely gone through friction forces in the previous years. Can anyone describe what is friction? जो जानते हैं shortly, what is friction force? It is an opposing force, first of all, right? It is an opposing force. So if it is an opposing force, what does it oppose? It opposes the motion of an object, है ना? जैसे कि ऑब्जेक्ट अगर राइट पे, लेट अस सपोज दिस इज द फोर्स अप्लाइड, right? This is applied force. So object will move in the right direction. So friction force will be acting in the left direction, because तभी तो object के motion इस case में oppose होगा. So we have got the direction of friction force. And what is the direction? It is opposite to the motion of an object. And you will always find friction always acts along the surface, right? Friction always acts along the surface. So yes, friction was contact force. That's why you will find it acting tangential to the surface, means along the surface. So that's the difference between reaction and friction. Reaction कैसे act करता है? Perpendicular to surface, and this acts along the surface. Yes, and it is due to the friction only you are able to walk on the surface of ground. It is due to the friction only we are able to stop any moving object, right? So quickly write down the steps for friction, mainly the directions.
Done, sir. Chalo, let us see the last force, that is tension. So let us suppose there is a rope to which an object is attached. है ना, ये object, let us suppose it is hanging. So what all forces are acting on the object? Definitely you all will say weight is acting in the downward direction. Now if this object is hanging, means it is stationary at this point. So there must also be opposite force which should act along the string. And this is what we call it as tension. So what is the direction of tension? Away from the mass. ये रहा mass, away from the mass. देखो away from the mass इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, but write down away from the mass along the rope or string. So in this case, my question is, can I say T is equal to W? How many of you agree that I can say T is equal to W? T is always opposite. ये ऑब्जेक्ट बैलेंस्ड है ना, तो बैलेंस्ड कब होता है? जब T will act in opposite to the direction of weight. We can say T is equal to W. It should always be equal. वेट का डायरेक्शन फिक्स है, तो टेंशन क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए, तभी तो ये इक्वल होगा, तभी ये हैंगिंग रहेगा, एल्स इट विल मूव. So tension will only act if the object is attached to a string or a wire. So this force we don't need that much, but yes, we need the knowledge of weight and reaction and the friction in this chapter. So before we move ahead, everyone should tell me ये जो हमने अभी पढ़ा related to weight, normal reaction, friction and tension, इसमें कोई डाउट्स हैं? क्योंकि आगे फिर नहीं तो दिक्कत होगा. No, sir, no doubts. So let me know here. अगर कोई डाउट्स हैं, then let me know that. Sir, can you explain tension again? Okay, we will explain it again. Tension is a force acting along the wire and its direction is away from the mass and along the string. So tension is numerically equal to the weight. So why it will be numerically equal to the weight? Because the object is hanging. Object is at rest.
Okay. So yes, Samad, let us suppose ऑब्जेक्ट ऐसे अटैच्ड है, ये रहा ऑब्जेक्ट ऐसे अटैच करके रखा है, ये रहा वेट, टेंशन क्या डायरेक्शन दिया है, अवे फ्रॉम द मास अलोंग द स्ट्रिंग, तो टेंशन इधर एक्ट करेगा, ये T1 हो जाएगा तो ये T2 हो जाएगा. Here we have the direction mentioned, away from the mass and along the string. जहां जहां भी स्ट्रिंग है वहां पर टेंशन एक्ट करेगा. So it is only in this case we have T is equal to W. So you will read more about tension in the higher classes, but now we do not require that. This was the 4 important forces, that's why I took you all through this tension, just a basic description, but we will mainly restrict ourselves to this weight, normal force and friction. Okay, let us move ahead. So let us suppose this is the object and force is applied on the object. What is the first thing that we observe? कि जैसे ही हम force लगाएंगे, so if the object is at rest और हमने force लगाया तो object क्या हो जाएगा, motion में आ जाएगा. Let us suppose एक ball move कर रहा है and you have applied force. Of course you will apply in opposite direction to stop. तो object पहले motion में है, फिर क्या आ जाएगा, rest में आ जाएगा, right? Because you are applying force to stop. So what is observed? If the object is at rest, that means 0 meter per second, और हमने force लगाया तो object की speed increase हुई, and that is something 5 हो जाए या फिर 10 हो जाए, right? या फिर 2 हो जाए, but definitely object speed is increased. If the object is in motion, we are making it to come to rest. तो अगर 5 है या फिर 10 है या फिर 2 है तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पर, it is decreasing. So in both the cases we are observing when the force is applied, there is change in velocity, right? There is change in velocity. ये change या तो increase हो सकता है या तो decrease हो सकता है. So if the force is applied, there is change in velocity. So can you all tell me, if I increase this force, will there be more change in velocity or less change in velocity? If I increase force, that means if force is increased, change in velocity I represent it by delta V. So if force is increased, there will be more change in velocity. So delta V will also increase. And on the other hand, if we decrease the force, the change in velocity will decrease. So what we are observing, that force is directly proportional to the change in velocity, and this change is of course taking place in some time. So this change is per unit time, and change in velocity per unit time is acceleration. So we can conclude force is directly proportional to acceleration produced in the object. To remove this proportionality symbol, we bring a constant of proportionality, that is m. M is the mass of the object, a is the acceleration of the object. So you don't need to derive this. Nowhere it will be asked. You will be asked questions based on working of F is equal to ma. But still, how did we get F is equal to ma? This was the reason behind that. Right? So you can always remember, force is equal to the product of mass and acceleration. Right? F is equal to ma.
Mohil Varman, last chapter we learned very clearly that acceleration is change in velocity per unit time. तो t तो टाइम है ना, एक एक वेरिएबल अब लिखने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है. अगर वेरिएबल यहाँ पर भी लिखना है, then what is the point of going through last chapter? There we have completely described velocity v. अब यहाँ पर मैं ये यूज कर लूंगा अगर a is equal to v minus u by t, तो अब यहाँ भी मत पूछना कि ये फाइनल वेलोसिटी है या u क्या है, ये भी मैं अभी ही लिख देता हूँ. जो हम यूज करेंगे, t is the time, a is the acceleration. These basic things you have to remember, all of you should remember. Okay, ये f फोर्स है. So that was about the force. So here we can see the effect of force is clear to us, that if we apply force, acceleration is observed in an object, right? That acceleration can be positive, negative, or zero depending on what kind of change it is. So let us do few questions based on this equation. So this is the object, this is 10 Newton, this is 10 Newton, and this is 5 Newton. We have to find the acceleration of the object if mass of the object is 5 kg. ये जिनका हो जाएगा they will mark it yes. %60 of you have given the answer. Everyone should try this. It's the most easy one. You just need to directly use F is equal to ma. %76 सभी कोई करेंगे.
Only 85% of you have answered. Chalo, let us see. This is the very simple question. ये देखो क्या क्या दिया है. Forces दिए हुए हैं, masses दिए हुए हैं. You are required to find acceleration. So how will we do that? We have the expression F निकाल, F is equal to ma, right? Acceleration क्या होगा? F by m. But here there are many forces. What force you have to take? The net force, right? So improvise this expression. Book में भी देखोगे तो लिखा रहेगा F is equal to ma, but what is that F? It is the net force, right? So what is the net force here? देखो टोटल राइट डायरेक्शन में फोर्स कितने एक्ट कर रहे हैं? 20 न्यूटन. लेफ्ट डायरेक्शन में 5 न्यूटन. तो नेट फोर्स क्या होगा? 15 न्यूटन इन द राइट डायरेक्शन. यस. सो एक्सीलरेशन क्या होगा? 15 by mass 5. So you will get acceleration as 3 meters per second squared. And this is our answer. Okay. Let us do one more. So an object of mass, let's say 2 kg, starts from rest and attains a velocity v in 0.2 seconds when 20 newtons force is applied. You are required to find v. We have to find v. ये सभी कोई करेंगे. Take the time everyone and do this.
चलो, most of you, they are giving 2 meter per second as the answer. See what is given. Object of mass 2 kg. Mass क्या है? 2 kg. Starts from rest. Object अगर rest से start कर रहा है, that means initial velocity क्या है इसकी? 0 meter per second. And attains a velocity v, मतलब final velocity v है in 0.2 seconds when 20 Newton force is applied. Force कितना लग रहा है इस पे? 20 newtons. So yes, just relate all of them. We have a direct relation. F is equal to ma. और a कैसे निकल सकता है? Using u, v and t. We know a is equal to final minus initial velocity by t. So let us find out. So a will be v minus 0 by 0.2. तो यहाँ से a क्या मिला? v by 0.2. तो यहाँ रख देते हैं v by 0.2. मास कितना है? 2 kg. And force कितना है? 20 newtons. So from here if you solve, you will get v as 20 into 0.2 by 2. So that will give us 2 meter per second as the final value of this velocity v. कितनों को ये समझ में नहीं आया? They will ask me the questions. Then we will move to the next question. Unit अलग कहाँ है? कहाँ है unit अलग? But units are different. Which units are different, शिवांश? अगर हम स्पीड निकाल रहे हैं तो मीटर पर सेकेंड में ही होगा ना? कहाँ यूनिट अलग है ना? सेम यूनिट है. यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व न्यूटन, सेकेंड्स, केजी, ये सारे किस में है? एसआई यूनिट्स में है. तो अगर ये एसआई यूनिट्स में है तो ये वी भी एसआई यूनिट्स में ही होगा ना, मीटर पर सेकेंड में. ओके. Okay, let us do another question then. So a force F is applied on an object which increases its speed from 5 meter per second to 10 meter per second in 2 seconds. You have to find out the force F applied if the mass is 2 kg. So everyone will do this and Rishabh will tell me the answer. Pratika will tell me the answer. बाकी सब कोई भी आंसर देंगे, but Rishabh and Pratika will tell me the answer for this.
Rishabh and Pratika, you should tell me the answer. A force F is applied on an object which increases its speed from 5 meter per second to 10 meter per second. That means its initial velocity is 5 meter per second, final velocity is 10 meter per second, and how much time is taken to increase the speed? 2 seconds. Provided that the mass is 2 kg, we can find out the force using F is equal to m times A. So m कितना हुआ? 2. A के जगह what we can write? V minus u by t. And let us put the values. V क्या है? 10. U क्या है? 5. और t क्या है? 2. So force will be 2 times 5 by 2. So that will be 5 newtons. Is this understood how we figured out the force? Any doubts in this? No doubts. Then whatever we have gone through till now, we talked about F is equal to ma, right? This was the effect of force, that if force is applied, acceleration would be observed in the object. This is Newton's second law. So let us read all about Newton's laws of motion, starting from the first law and taking more into details about the second law. So Newton's laws of motion. So here Newton gave 3 laws of motion. So basically, what was his law of motion? He observed the movement of an object and he made certain laws which were governing the movement. So let us see in detail. So first we will see Newton's first law, and then we will see Newton's second law, and then Newton's third law.
Newton's second law पहले लिख लेते हैं because we already talked about this. It states F is equal to ma. So you cannot say that force is product of mass and acceleration. Looking at the formula we can say, but what did Newton say? To get that, let us use this expression. So instead of A, I will write it as V minus U by T. So force क्या बन गया? M into V minus M into U by T. So anyone can tell me what is this M into V? You all have the idea of momentum. Momentum क्या होता है? It is the product of mass and velocity. Right? Momentum is the product of mass and velocity. How many of you are aware about this momentum expression? Mass into velocity? You should remember what is momentum. It's just a variable which is required to map the motion of an object. जैसे हमने velocity, speed, acceleration पढ़ा, वैसे ही एक variable है momentum. And how do we define momentum? Mass into velocity. So yes, I can also say momentum is a vector quantity, right? तो अगर mass into velocity momentum हो गया, तो mass into final velocity क्या होगा? Final momentum, right? This is final momentum. तो वैसे ही मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम एंड डिवाइडेड बाय टी. ये एक्सप्रेशन क्लियर है सभी को? जिनको डाउट्स है दे विल लेट मी नो. आई हैव रिटन फोर्स एज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम टी, एंड आई विल फर्दर राइट इट एज change in momentum per unit time t. And using this, I will give the definition of force. That was what Newton stated in his second law. So he said, force is the rate of change of momentum. So let us write that. Force is the rate of change of momentum. Right? Either you can say rate of change of momentum, or you can say force is defined as the change in momentum with respect to time. दोनों बात बराबर है. Either you call rate of change of momentum or the change in momentum with respect to time. Okay, so yes, first you all should write down the expression for momentum. You have to remember that expression and also write down this Newton's second law. So if you have to state what is Newton's second law, so what you will state? This one. Force is the rate of change of momentum. ये नहीं करना है कि न्यूटन सेकेंड लॉ याद आते ही चलो एक्सप्रेशन हम यूज कर सकते हैं F इज इक्वल टू एम ए, बट जब उसको स्टेट करना है या डिफाइन करना है, you have to use this statement. Force is the rate of change of momentum. This is clear to all? Everyone should write it down. Then we'll talk about the other two laws. And then in the next class, we will explore in detail about the three laws of motion. So at the end today, we are just going through the basics of the three laws of motion.
जिनको doubts है, they will ask me. Remember, we are going to go through this once again because this is the most important thing in forces and laws of motion. तो आज हम ये लास्ट में जा रहे हैं because time is about to end. So in the next class, we will start with again the 3 laws of motion. But you should be roughly prepared about what we went through in today's class. है ना? तो कोई doubts है? Let me know. No doubts. That's great. Okay. Talking about Newton's first law. First law, this is quite descriptive. We will see this one in the next class. Third law is very simple. Let us go through it. To every action, there is equal and opposite reaction. There is equal and opposite reaction. So this statement you will find everywhere about Newton's third law. What this states, इसका एक एग्जाम्पल हमने तो आज देख ही लिया कि वेट नीचे लग रहा था ऑब्जेक्ट पे, तो एक रिएक्शन फोर्स ऊपर लग रहा था, and this reaction force was only being applied when there was action force. बिना एक्शन के रिएक्शन फोर्स पॉसिबल नहीं होंगे. Let us see. Let us suppose this is a wall and you apply some force on the wall. Let us say 10 Newton. So you will see that exactly same amount of force is applied on you by the wall. Now here the force applied by us, this becomes action, and due to this action, whatever force is applied by the wall, that becomes reaction. Right? So can anyone tell why this reaction force acts on a stationary wall? Why this force acts on you? Because of the wall. फ्रिक्शन कहां से आ गया शिवांश? फ्रिक्शन तो तभी होगा ना जब ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा. Wall is not moving. So if the wall is not moving, तो फोर्सेस क्या होने चाहिए? बैलेंस्ड होने चाहिए. तो ये एक्शन अगर लगाया तो इसको बैलेंस कौन करेगा? Reaction force, and that's the reason for this reaction force, to balance the force applied. Why this reaction force is acting? To balance the force applied. So Newton's second law and third law related to it, you can write them, and in case of any doubts, let me know. And in the next class, we will again begin with Newton's first law and then quickly go through second and third law once again.
चलो ये सभी का हो गया. So I assume no doubts. That's great. So okay, let us meet in the next class and we can continue from the Newton's laws of motion. All right. Okay, bye everyone. And also watch that guys. मैं इसका आज वो अपलोड करने वाला हूँ in one shot the complete chapter. So if you go through that guys, so you will really like it. और सारे कॉन्सेप्ट भी आपके रिकैप्चुलेट हो जाएंगे एंड उसमें मैं पूरे चैप्टर को कवर करने वाला हूँ इन 1 and 1.5 आवर्स मान लो. राइट. सो watch that on the YouTube. All right, bye everyone. वो जो 1 आवर का रहेगा रिकॉर्डिंग वो मेरे चैनल पे रहेगा. ये सिर्फ क्लासेस के आपको मिलेंगे. विष्णु सर के यूट्यूब पे आपको सिर्फ क्लासेस के मिलेंगे. ठीक है. तो जो एक्स्ट्रा बनाता हूँ मैं अलग से वो मेरे ही चैनल पे रहेंगे. अच्छा मैं फिर चैनल लिंक डाल देता हूँ. मैं लास्ट टाइम शेयर किया था, आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए था. मैं शेयर कर दे रहा हूँ. I have shared. So tonight by 10 p.m. I'll post because 9 p.m. all my classes will get over. 10 or 10:30 you can assume or max 11. Chalo, go through that guys. It will help you to recapitulate and see you all in the next class.